Hello students, my name is Yogesh Jain. Today we are going to talk about common errors in our answer sheets while we answer questions of our question paper. So let's talk about those errors of English subject. As you know that our question paper is divided in three parts. Section A, reading comprehension. Section B, writing and grammar. Section C, literature. So I have taken some questions and their answers in which we make errors. So we will focus on those errors and we will try to find out the solution, that how should we write correctly without errors. So let's start. So common errors, while it is section A, B or C, some common errors are capital letters in the middle of sentences. We know that capital letter is used only with the first letter of the first word of a sentence. We can't use capital letters in middle or at the end. So keep this in mind. Syntax error, right? Syntax error is wrong use of punctuation marks, or we use punctuation marks at the place where it is not necessary to add, like comma. You know, use of comma, use of punctuation marks makes the sense of the sentence, or wrong use of punctuation marks can change the whole meaning of the sentence. So keep it in your concentration that you use punctuation marks sensibly. Excessive use of abbreviations and WhatsApp language. You have to remember that we use formal writing while we answer any question. So because of WhatsApp, excessive use of WhatsApp or other social media or our communication, we use abbreviations, means short forms, or we use WhatsApp language like please, it's PLEASE, but we write PLZ or only PL in place of full spelling. So avoid this habit. No mention of which question is attempted in case of choices. Like we have so many choices. You have to answer question 1 or you have to answer question number 2. You are answering the question, but you have not mentioned that which question you are attempting. Like for example, we have question number 5. Just imagine we have question number 5 in which we have question number A and we have question number B. You have to attempt any one question. What we do? In our answer sheet, we write answer 5 and we start writing the answer. But how the examiner will come to know that you are answering question A or question B? So properly mention your full question number, like whether you are answering question number 5A or you are question number 5B. Mark it correctly. So keep all these points in mind as I am telling you. As we are talking about section A, reading comprehension, what are the errors there? Like no paraphrasing in answers. What is paraphrasing? Paraphrasing is, just for example, we have an unseen passage in the question paper and we have a question and the answer is written as it is in the passage. You can find the answer as it is answer according to question in the passage, but you are not to write the passage language as it is, the lines of passage as it is. You are to reframe the sentence, you are to reframe the answer in your words. It is called paraphrasing. To rephrase a sentence, to rephrase a thought is called paraphrasing. So use paraphrasing in your answers.
Don't write answers as it is from passage. Confusion in attempting MCQ pattern questions. We get confused, like the confusion is, you have a question and you have 4 options in which you have to choose the correct option. But when you see the options, you may get confused that option A is correct, option B is also correct, and option C, option D is also correct for the question. Then what should we do? Actually, there is only one answer that is correct. Means you have to choose the best answer from the 4 options. Okay, so don't be confused in MCQ based questions. Like for example, you are asked a synonym of a word, but you have to find the synonym from paragraph 4, paragraph 2 or paragraph 5 in the passage. It is written in bracket, like find a synonym of a word. Just imagine wish. You find a synonym of word wish, bracket paragraph 4. Then you have to concentrate only on paragraph 4, not on paragraph 3. Don't find that, or if the synonym is given in paragraph 3, that is not the answer. You have to choose the answer from paragraph 4. It is given in the question that you have to choose the question from paragraph 4. So don't be confused about the title of the passage. Yes, this is the most favorite question of examiner. You have a passage, you have an unseen passage, and you have a question that what can be the suitable title for the given passage. You have 4 options. In all 4 options, you have the sense of the title, but there is only one option that is best suitable. So concentrate on that. Like this is the passage regarding Facebook. What are the effects of Facebook? In which we have questions like in unseen passages. You will have MCQ based questions or very short answer questions, vocabulary based questions to find out the synonym or antonym. So these mixed exercise you can get in an unseen passage. So like we have some MCQ based questions, like question number 1, which of the following statements is not true? You have to find out the statement which is not true. Focus on it. Not true means you are not to select which is right, you have to select which is incorrect, which is not true. So keep in mind that you have to find not true. Similar questions are, you may be asked that find out from the following options which is not correct, which statement is not correct. You may find these type of questions. So keep in focus that you have to find the statement that is not correct, the statement that is wrong, the statement that is not true. Means you have to find the incorrect, you are not to find out the correct. Alright, so keep concentration on that. Like here we have an answer sheet here. Like here you can say, here you can see that here is the question has a syntax error at very starting point. Like the student has written here the, but T is small and we know very well that we start the sentence with capital letter. So this is the error. Here he has used comma, that is incorrect, or he has
he wants to write users, many users, but I'm not understanding it's we or you. So don't make these type of errors. Here again, this is and sign. We are not to use this sign. We are to write and and. We cannot use the sign. Like we wanna. It's a WhatsApp language. I wanna go. I wanna eat. It is not for formal writing. You are to read. You are to write we want to. So WANA, this type of abbreviative language is not used in formal writing. So again here we share our privacy. Why the student has used capital letter? The word is in the middle of the sentence. So S should be small. So these type of errors we find in our writing. Some points I want to tell you that when you start writing in your answer sheet, make it clean, make it neat and clean. Your writing should be good, it should be understandable, and there should be a proper gap between two answers. Give proper spacing. I think 2 lines spacing is a must between two answers. Some students write without leaving any space. They write continuously, and it is sometimes it becomes very hard to judge that where an answer is ending and from where the second answer is starting. कहाँ से पहला आंसर खत्म हो गया, कहाँ तक पहला आंसर खत्म हो गया, कहाँ से सेकंड आंसर चालू हो गया, पता ही नहीं चलता. So leave proper spacing. एक लाइन नहीं तो 2 लाइन की स्पेसिंग तो होनी ही चाहिए. That is the point. And next point is, if you want to answer the paper is, you have section A, then you have section B, then you have section C. It's your choice. You want to answer, you are to answer which section first. No problem if you start with literature. There is no problem if you start with grammar or letter writing or paragraph writing. आप जिस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना चाहें कर सकते हैं, इसके लिए कोई मार्क्स नहीं कटते हैं. So it's on you that which question you answer first. All right. Now we come to grammar. No proper understanding of tense. This is a very big mistake. Like it's a crime. Why? We know tense is root of English language. ये टेंस टॉपिक ही है जिसके ऊपर पूरी इंग्लिश ग्रामर, इवन लिटरेचर भी टिकी हुई है, क्योंकि टेंस की नॉलेज से ही तो हम सेंटेंसेस फॉर्म करना सीखते हैं. यू आर टू आंसर लिटरेचर क्वेश्चंस, यू आर टू अटेम्प्ट राइटिंग सेक्शन, यू आर टू अटेम्प्ट ग्रामर क्वेश्चंस. इफ यू हैव नो नॉलेज ऑफ टेंस, अगर आपको टेंस की ठीक नॉलेज नहीं है तो आप किसी भी सेक्शन को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर सकते. यू कांट अटेम्प्ट any section properly. So it's a must that you have the complete knowledge of tense. And we have 5 topics like tense, determiners, subject verb agreement, direct indirect, modals. All topics are based on tense. Mostly subject verb agreement, direct and indirect speech. ये जो topics हैं तो पूरे के पूरे tense पर ही based हैं. If you are not good in tense, then you cannot attempt the questions of direct indirect or subject verb agreement correctly. तो टेंस की नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए. Confused with connectors, change of person and verbs in reported speech, that is direct and indirect speech, also called narrations. You are given a question of direct speech. You are to convert that in indirect speech. आप जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करोगे तो हम अच्छे से जानते हैं सेट टू कन्वर्ट होगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा हट के कोई कनेक्टर आएगा, प्रोनाउन चेंज होगा, टेंस चेंज होगा, कोई टाइम वर्ड है
रिपोर्टेड स्पीच में, तो वो चेंज होगा। तो आपको ये सारे बेसिक रूल्स, बेसिक चेंजेस के रूल्स पता होने चाहिए। यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट दी रूल्स दैट हाउ प्रोनाउन, टेंस और टाइम वर्ड्स आर चेंज्ड। अगर आपने इंडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को लिखा, इफ यू हैव रिटन द सेंटेंस इन इंडायरेक्ट स्पीच एंड देयर इज एनी एरर रिगार्डिंग एनी पॉइंट, अगर किसी भी पॉइंट से रिलेटेड कोई भी एरर होगी तो बी श्योर आपको उसमें कुछ भी नंबर नहीं मिलेगा, आपको उसमें कुछ भी मार्क नहीं मिलेगा। जस्ट इमेजिन द क्वेश्चन इज हैविंग वेटेज ऑफ 1 mark and you have made the whole sentence correctly, but there is a very small error of pronoun, then the examiner can cut the whole sentence. Don't expect half or 3/4 marks from the examiner. He can cut your whole sentence. So there should be no error of pronoun, tense or time word. और याद रखना, keep in remember that at least we will have 3 or 4 sentences to change in indirect speech. 3 से 4 नंबर का वेटेज डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का हो सकता है एग्जाम में। So these are 2 topics, tense and direct and indirect speech. You should have the complete knowledge of these 2 topics. Confused with rules of subject verb agreement. देन हमारा थर्ड टॉपिक है ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। मैं आपको बता दूं कि कुछ 12 to 15 रूल्स हैं, उसी पे बेस्ड होता है हमारा क्वेश्चन क्लास 10th का। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वी आर कंफ्यूज्ड टू कैलकुलेट दैट द सब्जेक्ट इज प्लूरल और सिंगुलर। देयर आर सर्टेन रूल्स, सो यू शुड रीड देम, you should have exercise of them, you should revise them. आप उनको बार बार रिवाइज करो, हो जाएगा। These all these topics are very very simple. Be sure all these topics are very simple. So don't be confused with the rules of SVA. Confused with the use if various modal verbs. Then we have fourth topic, modal verbs. Modals. We are given a sentence and there are some options like head here, dash, I come in. Options are can and may, and dash I come in means he want to say may I come in or can I come in. It is related to permission, and for permission we have both can and may. Then what to do? We know we use can for informal permission that we take from our juniors, from our friends, where permission is not so necessary to be taken. जहाँ पर परमिशन इतना जरूरी नहीं है लेना, वो हम ऐसे ही अपने बराबर वालों से, अपने दोस्तों से, अपने जूनियर से परमिशन ऐसे ही मांग लेते हैं, बट इट्स इनफॉर्मल। तो वहां पर हम कैन यूज करेंगे। How we come to know in this sentence? The sentence is starting with hello dear. आप अपने सीनियर्स को हेलो डियर नहीं बोलोगे, आप अपने सर को हेलो डियर नहीं बोलोगे, आप अपने फादर को हेलो डियर नहीं बोलोगे, या आप अपने दोस्त को ही बोलोगे, या अपने छोटे भाई या जूनियर्स को ही बोलोगे। So we have come to know that we are to use here can in place of may. So don't be so much confused. Read the sentence carefully. Focus on the sentence and you will get the answer. So don't be confused with the use of various modal verbs. There is a proper difference between must and should. Must is a strong advice and should is a moral advice. So keep those differences in mind and your question of modal verb will be right. Like here we have some questions. You as well as he
dash going to Delhi. Now it's a matter to be in a hurry if we are using ठीक है he है ना, तो he के साथ तो is आ जाएगा, क्या प्रॉब्लम है? He is going to Delhi, but it's a question from subject verb agreement. You should remember here we are having you as well as he. यहाँ पर he अकेला सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर टोटल सब्जेक्ट है you as well as he, and we have a proper rule. If we have a connector as well as along with together with between two subjects, then we will take verb according to first subject. It's a proper rule, very simple rule. Keep this in mind while you are attempting the question. So you as well as he, what will come with you? Are. You are means you as well as he are going to Delhi. So I would suggest that focus on the question, read the question carefully, and feel free. Don't have any type of tension in your mind that makes mistakes. अपने दिमाग में कोई टेंशन मत रखो जिसकी वजह से मिस्टेक्स हो. बिल्कुल रिलैक्स रहो, आराम से आप पेपर को अटेम्प्ट करते चले जाओ. Like we have some other questions. I don't see why you dash borrow his cycle. You have one of your own. Options are should, could, may, might. I don't see why you dash borrow his cycle. अब सेंस निकाल के देखते हैं, सेंटेंस का सेंस क्या हो रहा है. चलो जो सही ऑप्शन है उसको छोड़ के मैं बाकी ऑप्शन लेके देखता हूँ. I don't see why you could borrow his cycle. Not making any sense. I don't see why you may borrow his cycle. Not making any sense. I don't see why you might borrow his cycle. But I don't see why you should borrow his cycle. तुम्हें उसकी साइकिल क्यों उधार मांगनी चाहिए, मैं नहीं समझ पा रहा हूं. So here should is correct answer. How we come to know? If we know the proper uses of each and every modal verb, then we will become able to solve the question. If you have proper knowledge of each and every modal verb, then very easily you can attempt the question. Like in this sentence, on last Monday, a passenger cannot board a slow moving train at Delhi railway station. Rewrite this sentence if this has any error. So on last Monday, what it is indicating? It is indicating past tense. Then how can we use here cannot? Cannot is used in present tense. For past tense we use could not. So it is the total game of focusing, proper focus on the question, proper attention towards the question. Here are some other questions related to grammar, and we will use same method as I have told you earlier. Like we can see this sentence, summer camps develop a child confidence. Use the given format for your response. You have to find the error. Write the error here, write the correction here. So summer camp develop a child confidence. Here child confidence, what is child confidence? It is nothing. We should write child's confidence. I can write here child's confidence, एक बच्चे का confidence. So you should have proper knowledge of grammar to attempt the question. This is the question related to direct and indirect speech. Like
Why do you not learn your lesson? A short conversation may be given to us and we have to find out the correct answer. Why do you not learn your lesson? It's difficult for me to learn the lesson because I do not understand the meaning of difficult words of the lesson. Now here the narration is given and here we are to write something. We are to write the proper indirect speech. Let's read it. Brother asked his sister Lalita why she did not learn her lesson. Lalita replied that it was difficult for her. Means we have come till here. To learn the lesson because here it is because I do not. Who cannot? Lalita. And do not, it will become past. So Lalita did not understand the meaning of difficult words of the lesson. Let's find it out. She do not wrong. She had not wrong. She has not wrong. She did not understand. This is the correct answer. So keep in mind the rules. अधिकतर गलती जो हम लोग करते हैं वो टेंस की ही करते हैं. तो आपको ध्यान रखना है रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में है कि पास्ट में है. जो हमें डायरेक्ट स्पीच में डायलॉग दिया गया है वो प्रेजेंट में है कि पास्ट में है. और अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब वो पास्ट या प्रेजेंट में चेंज होगा. कीप दोज रूल्स इन योर माइंड. नाउ राइटिंग सेक्शन. अब हमारे पास राइटिंग सेक्शन है. राइटिंग सेक्शन की एक बहुत अच्छी बात यह है कि उसमें हमारे पास दो चीजें हैं, लेटर राइटिंग एंड पैराग्राफ राइटिंग, एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग फॉर क्लास 10th. These are the two questions which will certainly come in our exam. Letter writing 5 marks, analytical paragraph writing 5 marks. ये दो क्वेश्चन जरूर आएंगे हमारे एग्जाम में और कोई ऑप्शन ही नहीं है और कुछ है ही नहीं है हमारे पास राइटिंग सेक्शन में. लेटर राइटिंग आएगी तो आएगी, कोई नहीं रोक सकता. पैराग्राफ राइटिंग आएगी तो आएगी, कोई नहीं रोक सकता. तो इन दोनों का एक प्रॉपर फॉर्मेट है, बहुत इजी सा, वो हमें याद रखना है. नो चॉइस, हमें वो लेटर राइटिंग का फॉर्मेट याद होना चाहिए. हम जो अधिकतर मिस्टेक करते हैं वो है फॉर्मेट राइटिंग की. हम डेट को अभी भी गलत लिख रहे हैं. वी आर राइटिंग डेट लाइक 13/02/2023. दिस इज रॉन्ग. वी आर टू राइट 13th February 2023. First of all, we will write sender's address, date, receiver's details, his designation. अब designation के पहले हमें to नहीं लगाना है. Like to the manager, it's wrong. We will write the manager. Then we will write organization name in next line. We will write city in third line. Then we will give spacing. Then we will write subject. Again spacing. Then we will write salutation like sir or dear sir. Then body of the letter will come and we will add subscription like we will write yours truly and the name given in the question. हम yours लिखते हैं या तो y small लिख देते हैं या apostrophe s को यूज करते हैं r के बाद. Your then apostrophe s. That is wrong. We are not to use apostrophe s. We will simply write yours without upper comma, without apostrophe. So जो फॉर्मेट है उसको हमें completely अच्छे से याद रखना है. So there is formatting errors in letter. Don't make those errors. No interpretation or conclusion in survey analysis. Means if we are having paragraph writing, then data is given in form of pie chart, table, graph. So read, analyze, observe that data given in any form in correct manner. आपको जिस भी फॉर्म में डेटा दिया गया है, टेबल, ग्राफ, पाई चार्ट, उसमें जो डेटा दिया हुआ है उसको आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे से उसको एनालाइज करो.
कब ज़्यादा है, कब कम है, इस मैनर में दिया हुआ होता है डेटा, तो उसको फिर अपनी लैंग्वेज में हमें यूज करना है. इन आर ऑन सेंटेंसेस वी आर टू राइट द डेटा. Don't write the data as it is given in the table, given in the graph. Use paraphrasing. यहाँ पर भी आपको paraphrasing use करनी है. No connectivity between the sentences in simple paragraph writing. Like your writing should be continuous. Your expression, your thoughts, your views should be in continuous form. Continuous form means एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से रिलेशन होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपने एक सेंटेंस लिखा, फुल स्टॉप लगाया, अब आपका जो दूसरा सेंटेंस है वो कुछ और ही बात कह रहा है और दोनों सेंटेंस आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं. सो थिंक वाइजली, देन राइट आंसर्स. यू शुड नो आपकी कंटिन्यूटी के भी मार्क्स होते हैं, मार्क्स डिवाइडेड होते हैं. अगर आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1.5 मार्क्स होता है आपका फॉर्मेट का, 1 मार्क होता है आपके ग्रामर का, 1 मार्क होता है आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स का, और 1.5 मार्क होता है आपके कंटिन्यूटी का. सो हर चीज के लिए सेगमेंट बने हुए हैं, उसके लिए मार्किंग अलग अलग तरह से होती है. सो कीप दीज पॉइंट्स इन योर माइंड. Like in this answer sheet, the student has added 2, that is wrong. He has used this type of date format, that is wrong. We are not to add 2, we are not to write in numbers only. How would we write? 30th January, JNU, sorry, JAN और JANUARY. आप चाहो तो पूरा स्पेलिंग लिखो या आप उसको शॉर्ट में लिखो, बट वो इट शुड बी इन अल्फाबेटिकल. इट शुड यूज JAN और JANUARY. इट इज नॉट 01. देन राइट ईयर इन डिजिट्स 2023. कुछ बच्चे होते हैं जो ओनली 23 लिख देते हैं, दैट इज रॉन्ग. नाउ सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट एक लाइन में होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए. व्हाट अबाउट दिस सैल्यूटेशन, डियर सर और सर इज नॉट प्रेजेंट हियर, एंड व्हाई दिस स्पेसिंग, ये स्पेसिंग क्यों है यहाँ पे. जो वर्ड्स हैं एक के नीचे एक होंगे. ऑलवेज स्टार्ट योर लेटर फ्रॉम अ फ्रेश पेज, नॉट फ्रॉम हाफ पेज. हियर योर स्टाफ, it is not your, it is yours. And what is staff? You should write yours truly or yours sincerely. Now we come to grammar. We have first flight and footprints without feet. We should know that we have 8 poems in our syllabus. हर पोएम का पोएट हमें पता होना चाहिए. इसका एक वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ सकता है. कोई पोएम हमको दे देते हैं, हु इज द पोएट ऑफ डस्ट एंड स्नो, सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द आंसर. या फिर इसका एक फायदा ये भी है, देयर इज वन बेनिफिट, इफ यू आर आस्क्ड अ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन फ्रॉम पोएम, फ्रॉम एनी पोएम, अगर आपसे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन किया जाता है किसी पोएम से रिलेटेड, आप आंसर कर रहे हैं, आंसर के फर्स्ट लाइन में अगर आप इस तरह से शुरू करते हैं, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड योर आंसर, द एग्जामिनर विल गेट इंटरेस्टेड टू रीड योर आंसर एंड ही विल कम टू नो दैट यू हैव नॉलेज दैट हु इज द पोएट, फ्रॉम विच पोएम द क्वेश्चन हैज कम. सो मेंशन द नेम, मेंशन द टाइटल ऑफ द पोएम, मेंशन द पोएट ऑफ द पोएम. It will be beneficial for you. No understanding of theme of or central idea of the poem. जो भी आपकी लिटरेचर टॉपिक्स हैं, चाहे वो कोई स्टोरी है, कोई चैप्टर है, कोई पोएम है, उसकी पूरी कंप्लीट नॉलेज उसमें क्या है वो आपको पूरा अच्छी तरह से पता होना चाहिए. You should have the solve the theme of the related topic.
No proper understanding of poetic devices. Poetic devices are very important. At least 2 questions will come related to poetic devices. आपके सिलेबस में करीब 12 to 14 पोएटिक डिवाइसेस हैं, उनके आप एक सेपरेट स्टडी कीजिए. यू शुड हैव अ सेपरेट स्टडी ऑफ पोएटिक डिवाइसेस. देन वेरी इजीली you can find out the poetic devices of any poem. Like we have rhyme scheme. एक बार हमें समझना है rhyme scheme होती क्या है, उसके बाद हमें अलग अलग पोएम में rhyme scheme को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है. एक बार rhyme scheme को हमने, उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो हमने पढ़ लिया, उसके बाद आप किसी भी पोएम का rhyme scheme निकाल सकते हो. So you should have the proper knowledge of poetic devices. Like for stories. स्टोरी क्या है वो आपको पता होना चाहिए. उस स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कैरेक्टर पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं. लाइक इफ यू सी अ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कैरेक्टर सुलेखा और ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ सुलेखा. अब सुलेखा है कौन, ये हमें तो पता ही नहीं कौन से चैप्टर में आया ये. अगर ऐसा हो गया तो हम उस लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को आंसर कैसे करेंगे. So you know, Sulekha is Bholi. It is from our book, book Footprint Without Feet. There is a chapter number 8, Bholi. Chapter number 8 or 9, Bholi. वहाँ से ये कैरेक्टर आया है सुलेखा. So you should know the names of characters of each and every chapter. No adherence to the वर्ड लिमिट. यू नो, आपको राइटिंग सेक्शन में 100 to 120 वर्ड्स में लेटर और पैराग्राफ राइटिंग करनी है. आपको 30 to 40 वर्ड्स में जो आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है लिटरेचर के वो करने हैं. अगेन आपको 100 to 120 वर्ड्स में लिटरेचर के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करने हैं. तो ये वर्ड लिमिट आपको पता होना चाहिए, इसको आपको ध्यान में रखना है. यू हैव टू कीप द वर्ड लिमिट इन योर माइंड. Your answer should not be a very big answer. It should not be a very short answer. कई बार हम देखते हैं कि पैराग्राफ राइटिंग ओनली हाफ पेज में खत्म हो गई. कई बार हम देखते हैं कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 2 पेजेस का या 3 पेजेस का है. दोनों ही चीजें गलत हो गई. आप वर्ड लिमिट से थोड़ा ऊपर नीचे चल सकता है, 20-30 वर्ड्स. जैसे मैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन for your writing section, for your long answer question of literature. 20-25 वर्ड्स कम या ज़्यादा, कम तो नहीं, ज़्यादा हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट नॉट मोर देन इट. इस बात का हमें ध्यान रखना है. पंक्चुएशन मार्क्स मिस्टेक्स, अगेन स्पेलिंग मिस्टेक्स, डोंट मेक स्पेलिंग मिस्टेक्स. Then we are to attempt questions. We have choices in attempting questions. तो उसका हमें ध्यान रखना है. Sometimes like we are given a choice. Here we have question number 5. Okay, question number 2. In question number 2 we have choice. We are to question number 1 or we are to question number as I given you the example earlier. Just you are to attempt question number 1 or question number 2 in section 2. Then write properly that which question you are answering. You are answering first question of question number 2 or you are answering second number of question number 2. It should be in your mind. All right. So we have come to know about all the mistakes we are making in our answer sheets. Let's have a look again. What are the tips and tricks
so that we cannot make any error. Our answer sheet can be error free. What are the tricks? Read the passage, like for reading comprehension. Read the passage 2 to 3 times carefully before attempting the questions. सीधा questions पे अटैक मत करो, पहले आप जो पैसेज है उसको एक बार पढ़ो, थोड़ा बहुत समझ में आएगा, दोबारा से पढ़ो तो उसके बहुत अच्छे से आपको पॉइंट समझ में आ जाएंगे, जरूरत पड़ती है तो उसको थर्ड टाइम वापस पढ़ो. Then we will have the complete, we will come to know about the complete knowledge of the passage. पैसेज हमसे क्या कहना चाहता है हम पूरे अच्छी तरह से समझ जाएंगे. Then start your answers. Try to paraphrase the answers from the passage instead of copy pasting it. Rephrase the sentence. Don't write the answers as it is written in the passage. Focus on rules of tense and reported speech, which will help with dialogue making. Pay attention to each and every topic of grammar, as it will help in solving integrated grammar questions in the paper. जो हमारे 5 टॉपिक्स हैं ग्रामर के, we have 5 topics in grammar. Have the complete knowledge of those topics. Read the poem and chapter thoroughly. जो भी poems हैं, जो भी chapters हैं, stories हैं, उनको आप बहुत अच्छी तरह से, उसमें क्या स्टोरी है, उसमें क्या एक्सप्रेशन है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए. उसको आप अच्छे से पता कर लो, पोएट के नाम याद कर लो. अंडरस्टैंड द थीम एंड सेंट्रल मैसेज ऑफ द पोएम. सेम, जो भी उसका पोएम का जो भी मैसेज है, जो कन्वे करना चाहता है पोएट, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए. यू नो, वी हैव वेरी इजी पोएम्स, वी हैव 6 line पोएम्स, वी हैव 4 line पोएम्स. पोएम्स आर वेरी इजी. और कुछ पोएम्स तो ऐसी हैं जिनमें केवल स्टोरी है, लाइक टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन. इट्स अ स्टोरी, इट्स अ टेल. सो उनको याद रखना बहुत आसान है. डू इट. फिगर आउट द राइम स्कीम. राइम स्कीम पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और राइम स्कीम कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है. इट इज़ वेरी easy to calculate the rhyme scheme. So do it. Understand all the characters and plot of the story. जैसे आपको पोएम में सेंट्रल थीम याद रखनी है, वैसे ही आपको स्टोरी का प्लॉट अच्छे से याद होना चाहिए, उसकी समरी अच्छे से पता होनी चाहिए, उसमें जो कैरेक्टर्स हैं उन सबके नाम आपको पता होने चाहिए. टेक टाइम टू रीड द पेपर केयरफुली बिफोर स्टार्टिंग. जब आपके हाथ में पेपर आएगा, आप सीधा क्वेश्चन नंबर 1 देखा, उसका आंसर करने लग गए, ऐसा नहीं करना. आप पूरे पेपर को एक बार आराम से देखो. What are the questions in section A? What are the questions in section B? From which segment letter writing question is coming? What type of data is given in analytical paragraph question? What questions have come in literature? एक बार उसको देख लो. Then you will have a plan. ऑटोमेटिक एक प्लान आपके दिमाग में आ जाएगा कि मुझे पेपर को किस तरह से करना है, पहले कौन सा क्वेश्चन करना है, बाद में कौन सा क्वेश्चन करना है. I will suggest that attempt the question whose answer you know the best. आपको जिस भी सेक्शन में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करो. लिटरेचर में भी जैसे आपको लगता है लिटरेचर मुझे सबसे पहले करना है, तो लिटरेचर में भी आपको जो क्वेश्चंस सबसे अच्छे लग रहे हैं, आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन मैं करता हूँ, ये मैं अगर सबसे पहले करूँगा तो अच्छा रहेगा, या ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर मुझे बहुत अच्छी तरह पता है, तो आप उसी को सबसे पहले करो. इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. सो दीज आर दी points I want to convey. These are the tricks. So your answer sheet will be error free. Make it neat and clean, give proper spacing, follow the rules and regulations I have told you here, and don't do silly mistakes. So that's all from my side. Thank you very much.